dad's an NRI. Okay, okay. So that is why I have the residency of the UAE. Okay. So that's why I can't be in India for more than 6 months. Now I've removed So it. you can't be in India for more than 6 months? Yeah. Why? Now she's taken I'm a it out. resident of the UAE. Since when? Not a resident of India. Citizen of India. पासपोर्ट आपका यूएई का है? नहीं, citizen of India बाबा, resident of UAE. इसलिए I can't reside here more than 6. अभी मैंने So you're residing over there only family के साथ? I used to, क्या पर कर रहे अभी हैं वहाँ पापा has taken वहाँ his पे क्या करते थे this thing ना, retirement. वहाँ पे क्या करते थे आप? Chill. और मतलब I कॉलेज used to only go for कॉलेज के a बाद? month. हाँ? कॉलेज के बाद? नहीं, मैंने एक दिन तो मेरी शूट चल तो रही एक थी, चक्कर मैं भी सुबह मारो। जाके शाम को आई just एक because I चक्कर भी have मार to लो। get out of India and then come back. So I've gone to Dubai in the एक day, चक्कर भी मार लो come ना। back in the evening. Like that. But 2 why? and a क्यों half क्यों hours सोच की रहे? flight. क्योंकि पापा was in India ना, So? तो हम लोगों को विजिट करने के लिए there were like different kind of visas. So your we mom just- used to stay here and... Yeah, dad used to say that. But that's always been the case since I was a little baby. Not even a little baby. When my parents got married, तभी शादी करके in a week, my dad left for Dubai. And it was an arranged marriage. He didn't come for a year and a half. Oh, dude, that's difficult. Yeah, and then और सारे relatives और सब लोग मम्मी को बोलते थे कि शिट धोखा दे के चला गया, ये नहीं आ रहा है, अभी शादी करके भाग गया है, अभी नहीं. और my mom used to be so terrible. फिर वो लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे कि इस Mom was not pregnant then, no? No, was not. कि इस डेट पे इस टाइम पे पीसीओ पे आ जाना, I'm going to call. तो वो ISD कॉल्स होते थे ना, तो तभी उस टाइम पे पापा कॉल करते थे. मॉम यूज्ड टू गो उधर, ऐसे वैसे कांच का वो होता था, So difficult, Phone yeah. booth. फोन बूथ पे जाके फिर वो लोग बात करते थे. और उसमें भी टेंशन क्योंकि इतना महंगा होता था. फिर then 1.5 years he was settling everything there, like he was 1 year 1.5 year. He got a house, got a very nice car, everything. Then he took mama there and that's when everybody was so happy, like yeah. And then I happened.